So today we'll start with what is the last class we stopped? Molar conductivity हुआ? Molar conductivity, equivalent conductivity भी होगा. ये G star, cell constant, uh, molar conductivity, Coleridge law नहीं हुआ. Okay. So once we'll go hard. कौन सी college? Huh? Now we have we'll revise once what is called as conductance. Conductance. Once a last class का revision कर लेंगे. Conductance is G 1 by R. We have conductance is 1 by R. Resistance is directly proportional to length, inversely proportional to area of cross section. R rho directly proportional to length, inversely proportional to R is equal to rho L by A. Then conductance. What is called as rho? Rho is called as resistivity. Resistivity. तो इतनी दूर तक G star होगा. G star भी हुआ ना? Okay. Resistivity. So resistivity is equal to R into A by L. R into A by L. Then what is called as conductivity? ये recapitulation है. Conductivity is reciprocal of resistivity. But molar conductivity. Molar conductivity is K into 1000 by M divided by molarity. Lambda M is equal to K by 1000 into M. K in lambda M is equal to K into 1000. Or if you divide by molarity, molar conductivity. If you divide by 1000 into normality, normality से divide करें तो equivalent conductor. Correct नहीं क्या? Yes. तो formula remains same. Sorry, lambda equivalent लिखना. Lambda equivalent is equal to K by 1000 into normality. Next, G star is equal to L by A. L by G star is equal to R into K. So इतनी दूर तक हुआ नहीं? Okay, recapitulation. Let us go for Coleridge law. Now we go for Coleridge law. What is Coleridge law states? The limiting molar conductivity. Okay, क्या limiting molar conductivity? At infinite dilution, I take a beaker. In the beaker, I have NaCl. Okay, NaCl, and you've added water, and you have diluted infinite time. You don't know how much water you have added. Understood? If you add 1 liter of 1 mole of a solute in 1 liter is called as molarity, and if you add water, if you dilute infinite times, we call it as limiting molar conductivity. At infinite dilution, the limiting molar conductivity can be represented as sum of contribution of cations and anions of an electrolyte. If you take it as NaCl as a salt. What is Coleridge law states? Coleridge law states that at infinite dilution, the limiting molar conductivity can be represented as sum.
sum of the contribution of cations and anions of an electrolyte of an is called as Coleridge law. Understood? Understood. Right. At infinite dilution, at infinite dilution, the limiting molar conductivity at infinite dilution, the limiting molar conductivity can be represented as sum of the SUM, sum of the contribution of sum, sum of the contribution of sum का तो SUM हुआ, sum of the contribution of cations and anions. Anions of an electrolyte. Of an what? Or yes, come back. Using Coleridge law, what we can determine? We can determine alpha, degree of dissociation. Degree of so formula is lambda m by lambda naught m. ये lambda m क्या lambda naught m क्या? Molar conductivity by limiting molar conductivity alpha. What is called as एक आपको application था. Ka is equal to C alpha square 1 minus alpha. This is called dissociation constant. Dissociation of an electrolyte. समझ में आया? Make note of this. Using what Coleridge law, we can determine degree of dissociation. Good girl. Next. You are not interactive as you were there in first year. You want to sit in the last. Or done. Today we'll try to finish this chapter. Today we'll try to finish this chapter. Inshallah, next class we'll do coordination compound. What do you wanted? Organic. Then, pardon? Equilibrium you wanted. Don't want. Now, right now they are in the mood of studying for board exam. So coordination compound I'll do so that it will be helpful for their exam. And we'll do neat of coordination compounds also at the same time. We come back, then we'll see about when they are come back from the midterm. No, we'll see when they after the portions completion of this and organic and all. Before we start organic, inshallah, I'll do what is it called as equilibrium. Okay. Or done. So K is equal to C alpha square by 1 minus alpha. Okay. Chalo. This there's something important about this. Sometimes क्या करता हूँ ना ionic mobility बोलता है. Ionic mobility. Ionic mobility is denoted as mu. Ionic mobility is denoted as mu is equal to lambda of cation. It can be cation or it can be anion by F. What is F? Faraday's law. So this is ionic mobility. You can calculate ionic mobility for cations or anions. Yes? समझ में आ रहा है? Which college? हुदा. नाम क्या है? कहाँ से? Bangalore से? Hyderabad. Can you proceed? चलो आज ये डील करेंगे Faraday's law. Faraday's law डील करने के बाद we'll try to do numericals. Okay. Yeah, put the pens on constant on the board now. We start with Faraday's law. Faraday's first
law of electrolysis. Faraday's first law of electrolysis. How to start with Faraday's first law of electrolysis? Concentrate on the board now. I have taken a simple experiment. I have taken a beaker. In the beaker, I have taken copper sulfate. I have taken copper sulfate. Two electrodes. Two electrodes. Copper electrodes. Each of these electrodes आपको 100 grams. चुपके ऐसा चुपके नहीं सर. Assumption एक इलेक्ट्रोड की वजन कितना 100 grams. 100 grams. लास्ट क्लास मगरिब के बाद घर को चलेगा. कल लास्ट क्लास मंडे है. हाँ? ये तुम्हारे सास का घर क्या बा. कौन हो बा. उससे क्या है बोल को सर मैं जा रू. हमें क्या समझिए तू जिंदा है नहीं है अगर क्या मालूम ना चले मगरिब के बाद आया मगरिब में दिखा मगरिब के बाद दिखा नहीं ना और बैग भी छोड़ को चले गए. कौन तेरे नौकर बैग उठा ले लगा दिया ना उन्हें. कौन दिया सर से 8 बजे वो पूरे काम आएंगे माँ खत्म कर ले को सर गई के बाद साहब क्लास हमें सीरियसली ले रही. सीरियसली क्या थी वैसा वैसा क्लास लिए तो क्या थी बोले जाता तुम्हें सर तुम्हें बराबरी पढ़ा रही नहीं हमें कहीं कहना कर. क्या थी एक कॉन्सेप्ट छोड़ा को क्या थी बोले तो अलग बात है. हमें जी जान लड़ा कुछ पढ़ा रही हमें हमारे बच्चे घर को. तुम्हें देखे तो मगरिब को आए नमाज पढ़ लिया हल्लू चले गए बाद में आए शामिल ले गए. ऐसा नहीं होता ना साहब. अब मैं कहती मगरिब में बोले नहीं सरकार चलेगा तो उसके वास्ते क्या जिम्मेदारी है. नेक्स्ट टाइम रिपीट करना को खाता लाता पढ़ बेजान मारा तो. नेक्स्ट नाउ Faraday's first law of electrolysis. इधर बैठ इधर बैठ दिखता नहीं दिख रहा है. ओके. Faraday's first law of electrolysis. I took a beaker. In the beaker I have taken copper sulfate. The copper electrode is 100 grams. This copper is also copper electrode is 100 grams. 100 grams, 100 grams. Connected to the ammeter and the potential. Ammeter keiku to measure the current. I want to send the current of my desire. म्हणजे जितना पसंद है उतना करंट पास करना. So I'll pass 10 ampere current. I pass 10 ampere current. For how many seconds? 10 seconds. When I pass current of 10 ampere for 10 seconds, what I could notice that one of the electrode is missing. एक इलेक्ट्रोड ही है और ये इलेक्ट्रोड की मास बढ़ गई है. 100 की जगह 200 हो गया. What that? The mass have been increased. I think you didn't understand. नहीं समझ में. अल्लाह बचा ले. हाँ? Yeah, please go. I've taken copper sulfate. This girl settle down yaar. I've taken copper sulfate. 2 electrodes of copper I have dipped. Before dipping, I found the mass. एक एक इलेक्ट्रोड की मास कितनी है 100 grams. How many grams? And these 2 electrodes are connected to the ammeter and the potential. Potential का तो करंट है. तो कितना करंट पास करेगा तो 10 एम्पियर पास करेगा 10 सेकेंड के वास्ते. तो what end of the experiment what I can see is this whole thing is missing and the mass of this has been increased. थास कितना 100 बढ़ा कितना 100 200 ग्राम बन गए ना. That is the law. What is the law? The law says like this. During electrolysis means what?
passing current बोल रहा सुना. During electrolysis, the mass of the substance deposited or liberated, correct. एक इलेक्ट्रोड करने लिबरेट हुआ, एक इलेक्ट्रोड करने डिपॉजिट हुआ. During electrolysis, the mass of the substance deposited or liberated at the electrodes is directly proportional to the amount of current passed. Amount of current अब प्रूव करतो मैं, मैथमेटिकली प्रूव करतो मैं. Faraday's law states that during electrolysis, during electrolysis, during electrolysis, the mass of the substance deposited or liberated at the electrodes is directly proportional to the quantity of the charge या तो amount of current pass. सर मैथमेटिकली प्रूव करो सर. कई को वासा एक इलेक्ट्रोड हजम होगा अगर को mass is directly proportional to q. q is nothing but I into t. I कितना कितना करंट पास करया 10 एम्पियर. कितने सेकेंड्स के वास्ते 10. 10 into 10 कितना कितना गेन हुआ, लॉस कितना हुआ, ये चलो लॉस कितना हुआ 100, गेन कितना हुआ 100. कितना करंट पास करा है 10 एम्पियर. कितने टाइम के वास्ते. सो 10 into 10. सो दिस इज द लॉ. m is equal to mass z into I into t. यहाँ z क्या, z is called as ECE. What is ECE? Electrochemical equivalent. Electrochemical what? Electrochemical equivalent. क्या बोलते सो ECE को? Electrochemical equivalent. सर z की वैल्यू क्या, z is equal to equivalent mass by 96,500 coulombs. z की वैल्यू क्या था. ओके इसे मैं चेंज करा दूं. मास इज इक्वल टू इक्वलेंट मास z की जगह इक्वलेंट मास बाय 96,500 coulombs I into t. एक फॉर्मूला. सर इक्वलेंट मास का फॉर्मूला है क्या, इक्वलेंट मास इज इक्वल टू atomic mass by valency. atomic mass by valency. तो इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, फॉर्मूला चेंज कर डाले जा. मास इज इक्वल टू इक्वलेंट मास की जगह ये करे जा एटॉमिक मास चेंज करा दो कलर. एटॉमिक मास इनटू आई इनटू टी डिवाइडेड बाय ये ऊपर गया. सो 96,500 coulombs इनटू वैलेंसी. ओ ये फॉर्मूला तो बहुत अच्छा ही है. एटॉमिक मास भी कैलकुलेट करे जा, वैलेंसी भी कैलकुलेट करे जा, टाइम भी कैलकुलेट जा, करंट भी कैलकुलेट करे. गॉट इट. यस सर इक्विवेलेंट मास का तो क्या सर, व्हाट इज एन इक्विवेलेंट मास. अब हम ऐसा करेंगे ना, इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर. क्या कॉपर की एटॉमिक मास कितना 64, रफली 63.75 64 ले सकती है. चार्ज कितना 2 तो 32. 32 को बोलते सो इक्विवेलेंट मास. 32 को बोलते सो
तो आप इक्वलेंट मास मेरे बच्चे आराम से सॉल्व करे जा. नीट में अगर फैराडेस लॉ पे आ गया तो क्वेश्चन डॉट करे जा, डॉट विदाउट मिस. आराम से फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करो, फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करो, आंसर मिल जाता है. कभी एटॉमिक मास पूछता है, कभी वैलेंसी पूछता है, इक्वलेंट मास पूछता है. दिस इज इजी वे ऑफ सॉल्विंग. समझ में बात. ये सभी दिस ऑल आर स्टिल आई विल गो अहेड. होगा फैराडेस लॉ करें, देन विल गो फॉर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है. इसके इसके बाद विल ट्राई टू डू प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. ये इधर अच्छा अच्छा इधर था. मैं इक्विवेलेंट मास किससे बोलती है? एटॉमिक मास बाय वैलेंसी. एटॉमिक मास तो वेरिएबल नहीं रह सकती नहीं है. सो एटॉमिक मास बाय वैलेंसी. इसे आओ एल्यूमिनियम को, इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्यूमिनियम. तो उसके एटॉमिक मास कितना? 27 डिवाइडेड बाय 3, 9. गॉट इट? यस. तो पहले क्या करेंगे? फैराडेस लॉ लिख लेंगे. फैराडेस लॉ क्या करेंगे? लिख लेंगे. चलो फैराडेस लॉ. during electrolysis during electrolysis during electrolysis, the mass of the substance deposited or liberated at the electrodes, the mass of the substance deposited or liberated at the electrodes is directly proportional to the during electrolysis, the mass of the substance deposited or liberated at the electrodes is directly proportional to the amount of current passed. Amount of current pass or or the quantity of the charge passed. Or what? Quantity of the charge passed. होगा? लिख लियो पूरा. m is equal to पूरा डेरिवेशन पूरा. जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, व्हाट इज ईसी. होगा? लिख डाले वो. डिड यू राइट दिस? इसकी है. और लिख डाले. यू रोट ऑल. यू डिडंट राइट दिस. इसके बाद लिखे
नेक्स्ट, कम बैक नाउ। क्या प्रॉब्लम, क्या क्या समझ में नहीं आ रहा? क्या आ रहा? न्यूमेरिकल सॉल्व करे तो आता पूरा। नेक्स्ट, एलिरस, कैन यू प्रोसीड? जेड की वैल्यू क्या देखे हैं? जेड की वैल्यू क्या इक्विवेलेंट मास में? ओके, चलो। फैराडेज सेकेंड लॉ, फैराडेज नेक्स्ट क्लास बी अर्ली। फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ electrolysis. Faraday's second law of electrolysis. How do you define Faraday's second law? दो बीकर ले लो, किसके किसके बीकर? चलो, टेक कॉपर सल्फेट, टेक जिंक सल्फेट solution. Two electrodes are connected through the potential. सेम करंट शुड बी पास, जितना करंट इसमें जाता है उतना करंट इसमें भी जाना। ओके, what is the losses when the same amount of current is to passed in two or more electrolytes? Same amount of current, when the same amount of current is passed into two or more electrolytes, the mass of the substance deposited, mass of the copper deposited or liberated is directly proportional to equivalent mass of copper. Equivalent mass of copper. Mass of zinc is directly proportional to equivalent mass of zinc. कंबाइन करें तो क्या होता है? इसे मास ऑफ कॉपर इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर, इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर. Mass of zinc is equal to equivalent mass of zinc. This is the mathematical form of second law of Faraday's. Let us proceed with, थोड़ा आगे बढ़ेंगे. मैं कभी भी शॉर्टकट यूज करता सॉल्व करने, कभी फॉर्मूला, बहुत रेयरली फॉर्मूला यूज करता, otherwise I'll go always shortcut by keeping one some values. Check it out this. देखेंगे, रुको पहले देखेंगे. Mass of copper, mass of zinc. If you don't follow the class, go back once you revise, it's on the YouTube, वहां से pause करके देखो, नहीं समझ में आया तो this is an advantage for you. Check once, नहीं समझ में आया क्या की बोले ना sir, I was not paying attention, you can solve. Those who are neat long term students, once you go through that, if you forget shortcuts, what is that given, go through once, मालूम तो करो ना. देख क्या मैं छोड़ डाली सो, कहीं का आंसर नहीं आ रहा है कर को. नाउ मास इज इक्वल टू, वी नो वेरी वेल, इक्विवेलेंट मास को क्या लिख सकती है? एटॉमिक मास बाय वैलेंसी. तो कॉपर को क्या करेंगे? 1 ले लेंगे, चुप चुप के, इन जनरल डिराइव कर रहे हैं, 2 ले लेंगे. सो एटॉमिक मास बाय वैलेंसी, एटॉमिक मास बाय वैलेंसी 2. तो इसे कंबाइन करें तो क्या होता है? इसे m1 by m2 is equal to a1 by v1 into v2 by a2. अब यहाँ a1 a2 v1 v2 क्या भी भाई, क्या ये वैलेंसी एंड एटॉमिक मास रेस्पेक्टिवली, करेक्ट होगा? मालूम हुआ? इसके एक एडिशनल फॉर्मूलेस पढ़ेंगे जो नीट में क्वेश्चन आया तो सॉल्व करने आसानी होती है. अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? चलो मैक्रोनॉस. Faraday's second law of electrolysis. चलो लिखो, Faraday's second law of
electrolysis states that during electrolysis, during electrolysis, the mass of the substance deposited. No, no, sorry, it's not during electrolysis. Extremely sorry. When same amount of current, striker ko likho, sir. When the same amount of current, when the same amount of current pass into two or more electrolytes, when the same amount of current is passed into two or more electrolytes, the mass of the substance deposited, the mass of the substance deposited or liberated when the same amount of current is passed into two or more electrolytes, the mass of the substance deposited or liberated at the electrodes is directly proportional to its directly proportional to its directly proportional to its equivalent mass. Over. Yes? Can you proceed? Can you proceed? Proceed करेंगे? चलो. करेंगे? लिख लिया? समटाइम्स क्या करता है नीट में वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन पूछ डालता है, मास ऑफ हाइड्रोजन पूछ डालता है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन पूछ डालता है. तो तब क्या करना? अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे तो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन भी पूछ डालता है नीट में. कॉम्पिटिटिव एग्जाम है. चलो देखिए, दिस अ फॉर्मूला. मास ऑफ मेटल, mass of metal divided by volume of hydrogen at STP is equal to equivalent mass of metal divided by 11.2 liters. 11.2 liters or 11,200 ml. नहीं सर, उन्हें हाइड्रोजन की मास पूछा तो तब क्या करना? तो क्या करना, ये फॉर्मूला यूज करना. मास ऑफ मेटल mass of hydrogen is equal to equivalent mass of metal divided by 1.008 grams. सेकेंड आपको ऑक्सीजन पूछता है. मास ऑफ मेटल
divided by volume of oxygen at STP is equal to equivalent mass of metal divided by 5.6 liters, or or 5600 ml. Don't try, don't, नहीं लिखना. Hey buffaloes, you need to understand first. समझ में आना क्या कर रही घर को. चुप कॉपी करना उसने. Mass of metal mass of oxygen equivalent mass of metal divided 8 divided by 8. ये बोर्ड्स को पढ़ो ना कोई. Don't study for the boards. Only for competitive exam. Only for competitive exam. Got it? Make or wrong. होगा. स्टार्ट करेंगे. अब जो ट्रिक दिखा तो नहीं वो दिमाग में रख लो. और let's start. Can we proceed? Let's start with. ये दिमाग में रखो. ये रखे रहे तो सॉल्व करे जा आराम से. ये 1 mole of electron. ये 1 electron नहीं, 1 mole. 1 mole of electron is equal to 1 Faraday. 1 Faraday. 1 Faraday is equal to 96,500 coulombs. 96,500 coulombs. 1 electron, 1 Faraday. 1 Faraday, 96,500 coulombs. अब तुम्हारा चॉइस का एक मेटल सोल्यूशन बोलो जिसकी इक्विवेलेंट मास अच्छा याद है. Is anybody who knows the equivalent mass? Copper की equivalent mass कितनी है? तो बोलो. If I pass 1 mole of electron, 1 Faraday or 96,500 coulombs into the copper sulfate solution, you can see the amount of copper liberated will be 32 grams. Aluminium का equivalent mass कितना? 9. अगर मैं aluminium chloride में 1 Faraday पास करा तो 1 mole of electron
कितना अल्यूमिनियम लिबरेट होता है? तो 9 ग्राम्स. अरे यार, it means that 1 mole of electron 1 Faraday 96,500 coulombs can liberate in general 1 equivalent mass of any metal. मैं 2 एग्जाम्पल लिया सो कॉपर एंड एल्यूमिनियम के, ऐसे 100 क्वेश्चन आप बोले जाएंगे. इन जनरल क्या 1 Faraday 1 mole of electron liberates 1 equivalent mass of. Come back. If I pass into water, acidulated water, एसिडुलेटेड वाटर का तो क्या लूं, पानी में थोड़ा एसिड डाल को इलेक्ट्रोलिसिस करना. क्या तो प्योर वाटर इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो उसे 1 ड्रॉप डाल को इसे बोलते हैं एसिडुलेटेड वाटर. तो कितना हाइड्रोजन लिबरेट होता है? 11.2 लीटर्स और 11,200 ml और 1.008 ग्राम्स. ये हाइड्रोजन at STP. सिमिलर वे ऑक्सीजन कितना लिबरेट होता है? ऑक्सीजन एट एसटीपी, हाँ बोलो, याद है ना? 5.6 लीटर्स और 5,600 ml और ये म्हणजे बहुत काम आता है. ये कभी भी मैं को ये सॉल्व करता. अरे इतने को इतना कितना आंसर आता. Always I prefer to use this concept to solve many questions. फॉर्मूला डालने नहीं रहता हमें, फॉर्मूला डालने को सब्स्टिट्यूशन कलेक्ट नहीं रहता. m इज इक्वल टू इक्वलेंट मास बाई 96,500 कूलम्स इंटू आई इंटू टी नहीं करता. आई डू इट इन द शॉर्ट वे. चलो लिख लो. और गुड, कैन यू प्रोसीड? चलो सॉल्व करेंगे. अब कैसा सॉल्व करना देखेंगे. वी गो फॉर दिस. डाउनलोड करें ना हमें. ये नहीं आया ना. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं करें.
चलो इससे स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट. राइट दिस क्वेश्चन. विल ट्राई टू. एक दो क्वेश्चन मैं सॉल्व करूं. मैं सॉल्व करूं दो क्वेश्चन ना. देखो जल्दी है. बिदर. कैन यू प्रोसीड. वाह. ओए. Put the pens on. Cons board down. I'll solve. क्या हुआ क्या. क्वेश्चन है नहीं. क्वेश्चन है नहीं है. चलो स्टार्ट करेंगे. हाउ टू स्टार्ट विद दिस. द रेजिस्टेंस ऑफ खाली यूनिट का गेम. गेम ऑफ यूनिट 0 पॉइंट कैपिटल एम. मोलारिटी. मोलारिटी 0.2 ओम रेजिस्टेंस. खाली यूनिट देखो 50 रेजिस्टेंस. स्पेसिफिक कंडक्टेंस साइमंस पर मीटर के की यूनिट कंडक्टिविटी की यूनिट. खाली आई डोंट रीड द क्वेश्चन जस्ट चेक दिस. खाली देखो सॉल्व कर डाले जा. के 1.3 साइमंस पर मीटर. फिर if the resistance of concentration to M2 0.4 molarity R 260 ohms. क्या होना सो. मोलर कंडक्टिविटी होना. तो इसकी मोलर कंडक्टिविटी होना सो. ये देखो है सो. तो क्या करता हूं. आई हैव अ फॉर्मूला. G star is equal to R into K. G star is equal to R की यूनिट आपको 50. के आपको 1.3. तो ये 0 चलेगा. ये पॉइंट चलेगा. 5 into 13. 5 3s are 15. 1 carry. So 5 1s are 5. 60. So per meter. पर ये जी स्टार ले को इसका क्या कैलकुलेट करता हूं. वही जी स्टार रिमेन्स कांस्टेंट. सेल कांस्टेंट कर बोलते हैं. सो आई टेक जी स्टार इज इक्वल टू आर इंटू के. जी स्टार बाई आर इज इक्वल टू के. जी स्टार कितना मिला 65 मिला. आर कितना मिला 260 था. इज इक्वल टू के. अब उन्हें उसे होना सो लैम्डा एम. लैम्डा एम इज इक्वल टू के बाई 1000. सर कैसा सर मालूम. इनटू एम कैसा सर मालूम. के की यूनिट आपको साइमंस पर मीटर देखो है ना. यस. when the k unit is Siemens per meter you have to use 1000 in denominator. k की यूनिट कितना. सॉरी 65 by 260 divided by 1000 into 0.4. तो ये ऊपर गया तो 65. ये ऊपर जाता दो भी तो ये होता 260 into 1000. ये डिवाइड into 1000 डिवाइड into 0.4. तो ये ऊपर गया. एक 0 चलेगा तो ये चलेगा. ये तो बचा के था ये 65 डिवाइडेड बाई कितना कितना
65 260 26 इंटू 4, या कोई एक जीरो इधर से निकाला तो 10⁻³ ऊपर जाता 10⁻³ ये 26 बना लिया, ये 65। तो क्या करेंगे इसे 25 बना लेंगे। 25 26 को 25, 5 5 are 25, 5 1 are 5, 5 3 are 15, yes, बच्चा 5 4 are 20, so 13/20, 13/20 का तो 12 ले लेंगे। अरे 13 को 12 बना लेंगे, 12 बनाएंगे, यहाँ को 10⁻³ हो 10⁻³ 12 बनाए तो 4 के टेबल में आता है। 4 3 are 12, 4 5 are 20, so 0.6, 0.6 इंटू 10⁻³ क्या है बा 0.6 के तो 6 इंटू क्या है क्वेश्चन हो है ना 6.25 इंटू 10⁻⁻4। अरे 0.6 भाई नहीं मालूम हुआ नहीं, नहीं मालूम हुआ नहीं, यहां से कंफ्यूजन स्टार्ट होगा। सूरत ना देखे तो मालूम होता है क्या रही नो कर डाले सो कर। मेरे बच्चे सुनो, ये पॉइंट निकालिया 0, तो बच्चा कहता 260 को 26 इंटू 10 करे जा, तो ये क्या हुआ 65 हुआ। 65/26 इंटू यहाँ था 10⁻³ इन्हें 2 इसका एक 0 इंटू 4 करेक्ट मा, इंटू 4 करेक्ट। अब मैं इस 26 को 25 बना लेता हूं, तो 25 5 5 are 25, 5 1 are 5, 5 3 are 15, 5 4 are 13/20. This should go at the top, 10⁻³ 13 को 12 बना लेता हूं, 4 3 are 12, 4 5 are 20, 0.6, 0.6 is equal to 10⁻⁻3, 6 into 10⁻⁻4. What? B? बीच ना आंसर मार्क करें उसको, नहीं मालूम आनी। After Salah,
Let us not waste our time. That's चलो. क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे. स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 3. ओके. ये क्वेश्चन कॉपी करो ना को डायरेक्टली सॉल्व कर ले जाओ. टाइम लगता नहीं तो गिवन लिख ले को सॉल्व कर को आंसर बोलो. क्या देखो है क्वेश्चन नंबर 3. हाँ ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट.
Question number 3. Don't copy the questions. Directly do the solving. Given लिखो करो, solve करना start. What be? क्वेश्चन नंबर 17 ये कॉपी कर लो, एक एक क्वेश्चन कॉपी कर लो बस. क्वेश्चन नंबर 17. Copied? Yes. Yes. करेंगे. Have a look here. Oi, constant on the board now. Limiting molar conductivity of lambda naught of NaCl, KBr, KCl are given. This thing you have. तो होनास म्हणजे lambda naught of NaBr. देखो है सो क्या? Lambda naught of NaCl plus lambda naught of KBr plus lambda naught of KCl. LHS RHS N होना Br होना तो कैंसिल करना को सा K तो K का तो I'll remove this, add introduce negative sign. Plus minus into plus is minus, K plus this gets cancelled. Cl gets cancelled. बचा क्या? Lambda naught of हाँ तो lambda naught of NaCl कितना देखो इस 126. KBr कितना देखो 152 minus 150 तो ये होगा 126 plus 2 128. क्या? Solve 19. Question copy करो नको, solve करो. Start. Question number 19. B only. Correct. D. B for buffalo. Yes. Correct. Come here.
can do also like this. Minimize करो. Shear gun equation ऊपर समझा. CH3 HCl. What are you doing? That's it. आगा ना सर. What you did? रिएक्शन लिखो उसमें सब्स्टिट्यूट करना इसमें. NaCl CH3CH. 91. NaC designates. नहीं समझ में आनी. ओके. क्वेश्चन नंबर 20. अच्छा एक काम करो. डू इट. क्वेश्चन नंबर 21. जूम. कौन क्यों आंसर ऐसा करता है? ऐसा ऐसा कर. जूम करो करो. जरा ना ऐसा जूम. Hey, donkeys, use your brain. Why are you buffaloes? Use your brain. Don't write. Use solve without pen. NaNO3 होना तो KCl एक जगह NaCl KNO3 तो कैंसिल करना से NO3 जाना तो कोसा निकालना तो KCl को नेगेटिव लेना. You don't have time. ओए हाँ कौन कौन की कितना 87 कहते हैं. आप 20 सूद ले कोई देखिए बॉयज. अरे दिमाग लड़ा रही. अरे NaNO3 होना उसे KCl होना तो क्या निकालना हमें यहां से. K और Cl निकालना नहीं है तो क्या नेगेटिव लेना. KCl को नेगेटिव लेना नहीं है. गद्दे चराओ जाको गांधी. गद्दे गद्दे चराओ. आप भी सूद ले गुड़ी. नहीं मालूम आनी. नहीं मालूम आनी. क्या. हाँ उसकी वैल्यू कहती है नेगेटिव KCl 152 माइनस 152 128 प्लस ट्रेन गए के बाद टिकट लेना उसमें सब.
Chalo. Solve question number 20. अरे directly solve करो. What is he given? What you are supposed to solve? 4.2, 4.6. Come here. 4.6. Kononopolis, you told. You didn't. This girl. We'll give her a chance, we thought. Lambda equal, correct? Question mark. G star is equal to R into T. Wow. I'll calculate question number 39. Right? Write the question. Question number 39.
I'll do. Okay, constant on the board now. Question लिख लिया रहता. I'll solve question number 39. लिख लिया question लिख लिया. I'll teach you how. Answer. कभी भी, always metal लेना. Always you have to take metal. Take metal. Which is the metal here? Nickel. Nickel पर charge कितना? 2 plus. कितने इलेक्ट्रॉन होना? 2 electrons. Give rise to Ni. 1 electron, 1 mole of electron, 96,500 coulombs. 2 into 96,500 coulombs can liberate 58 grams. Atomic mass of nickel is 58. Okay. Come back here now. कितने ampere current? 12 ampere current. How much percentage करंट उन्हें 12 एम्पियर लिया है लेकिन यूज करा कितना 60%. 12 एम्पियर में यूज करा कितना है 60%. So into 60 by 100. So 20 gets cancelled. 2 3s are 2 5s are. So 2 6 30. No, कितना था? 26 by 36 by 5. 5 sevens are 35. 7 ampere. How many ampere? Okay. Q is equal to I into T. I कितना 7 ampere. Time कितना 1 hour. Per hour का तो 1 hour. कभी भी याद रखो Faraday's law में it should be in seconds. So 60 into 60. 60 into always time should be in seconds होगा. So this is nothing but Q. This is nothing but Q. So 7 into 60 into 6. 7 into 60 into 60. How many grams? So X is equal to 58 into 60 into 60 into 7 divided by 2 into 96500. 1010 gets cancelled. 1010 gets cancelled. So 2 ones are 2, 2 twos are 4, 2 nines are 18. This 7 uh 6 के टेबल में. Check it out now. Start solving. How many grams check? What is the answer? Huh? What? 1.0? 7.57. Option A. Option A. Huh?
घर को वापस करना, घर को. You have to remember what to do now. That is only neat. That is only neat. That is only neat. Or what is the answer? याद रख, याद रखना, याद रखना. क्या भी नहीं कर सकते. मालूम नहीं था, अब मालूम है, भूलना नहीं. क्वेश्चन नंबर 43 स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 43 राइट. वन मोर आई सॉल्व. और एक सॉल्व कर दो, लिख लो. क्वेश्चन नंबर 43. और क्या 108 चार्ज क्या था. देखो, चार्ज ऑन दिस थिंग इज सिल्वर को चार्ज क्या था. लिख लिया है, क्वेश्चन लिख लिया. अब इसके बाद सॉल्व करेंगे. रुको, वेट अ मिनट, 2 मिनट्स. इसके बाद चलो. द अमाउंट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड बाय पासिंग 2 फैराडे. सिल्वर को चार्ज आपको Ag प्लस, तो कहते हैं इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन Ag. 1 फैराडे gives 108 grams. 2 Faraday gives how much? 2 into 108. 216. Oh, or, or do this. Question number 44. 44. अरे सिंपल ना भैया, 5.12 kg बोले सुना. तो यहाँ छोगा ना. What is this? You can do like this. 3 into, ओए, 3 into 96,500 tan liberate 27 grams. Grams. And what is this called as? कितने kg? How many kg? 5. 5.12 kg. 5.12 into kilo ना, into 10 to the power of 3 grams. How much होगा? So Q is equal to 3 into 96500 into 5.12 into 10 to the power of 3 divided by 27. So 3 ones are 3, 3 nines are 27. So 1 2 1 2 चलेगा. Q is equal to 965 into 512 into 10 to the power of 3. 9 को 10 रख ले. 9 को 10 रख ले. 10 रख ले तो ये चलेगा ऊपर. अरे 10 टू द पावर ऑफ 2, तो ये 956 इंटू 512.
5 1 5 1 5 5 अरे बेवकूफ आगे की इसे 500 रख लियो, 510 रख लियो, इसे आपको करीबन ये 50 का तो इन्हें जीरो निकालना है, तो यहाँ 10 to the power of 3 2 है, तो कितना बचे यहाँ 10 जीरो और एक चले 551 हो ए नो इट शुड बी बी क्या किए नहीं वही नॉट मल्टीप्लाइंग यू डिड मल्टीप्लाई तुम्हें अलग करें फिर भी आंसर नहीं मिला ऐसा कैसा छोड़ना होता बोलो ऐसा कैसा छोड़ना होता आंसर टू बी डन लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन लेट्स सी Al3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन दिखेंगे कहीं को नहीं आता आंसर Al so 3 into 96,500 coulombs can liberate 27 grams atomic mass तो कितने coulombs दिया सुना कितने की ग्राम्स हो रहा है ना 5.12 kg 10 to the power of 3 grams how much so this becomes so 3 into 96500 into 5.12 into 10 to the power of 3 divided by 27 so ones are nines are this is 10 so 10 gets cancelled 2 1 2 20 gets cancelled so you get 9650 9650 965 into 512 I'll make it as 10 so you go this 10 to the power of 2 so this become 965 into 51 into 10 to the power of 3 तो 51 के करीब 51 को तो 50 से रख लेना 000 so कितना हुआ so this is so you have 509651 into 50 so this is 0 रखिएगा सीध में 5 ones are 5 5 5s are 25 2 carry 25 5 carry 2 5 6 are 30 32 3 carry 5 9s are 45 5 9s are 45 नहीं 5 48 48 के तो 50 के करीब सो 0 482 550 इंटू 10 to the power of 3 10 to the power of 5 तो 500 के 5 के करीब 400 के दिस थिंग इज तो इसका होगा फॉर्मूला दिस इज 10 to the power of बी ऑप्शन नहीं 3 मूव कराना पॉइंटर इट शुड बी डी 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 3 पॉइंट पीछे जाना ना ऑप्शन डी 10 to the power of 7 आना कॉपी कॉपी डाउन तो ये करीबन 0 1 2 3 4 7 के करीब आना ना 7 आना तो वैल्यूज आर लाइक दिस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 कॉपी डाउन क्वेश्चन नंबर 36 एक क्वेश्चन कॉपी कर लो दीदी क्वेश्चन नंबर 36
Can we solve करूं? एक solve करूं मैं? See here, when the same amount of electric current, जब भी यूज करता टर्म same amount of electric current, it is Faraday's second law. Okay. If 1.8 grams of silver is obtained in first case, find the amount of hydrogen liberated at STP. Okay. मेरे पास फॉर्मूला है, mass of metal, mass of Ag, mass of Ag divided by volume of hydrogen at STP is equal to equivalent mass of Ag. किस में दिया सो? सेंटीमीटर क्यूब में दिया सो. So gas liberated, so it should be 11,200 ml. अब mass of silver कितना देखो, 108, 1.1.08. वॉल्यूम मालूम है, x इज इक्वल टू इक्वलेंट मास अभी बोले, इक्वलेंट मास ऑफ सिल्वर, इक्वलेंट मास ऑफ Ag प्लस इज एटॉमिक मास बाय वैलेंसी. इसके एटॉमिक मास आपको 108 डिवाइड बाय 1, सो इट इज 108 divided by 11,200 ml. So x is equal to 1.08 into 11,200 ml is equal to 108. 1 to 1 2 108 108 gets us. X is equal to 112. Can we? Question number 37. Don't write. ऐसा पढ़ना बोलना. When 1 farad of electricity is passed to the acidulated water, oxygen evolved will be. Are standard by 1 Faraday will give 5.6 liters. Option B. Check karo. 1 Faraday, 1 electron. Check this. 5.6 liters. 5.6. Okay. Question number 38. And try this. Question number 38.
आंसर यू गॉट? नहीं मिला आंसर. अरे कैल्शियम पूछा सुने. ये बॉयज क्यों समझ में नहीं आ रहा सिंह? नहीं समझ में आ रहा है क्या? बिफलोज. अब लास्ट टाइम ये समझा रहा हूँ. लास्ट टाइम ये लास्ट टाइम आई वांट यू टू वर्क इट आउट आफ्टर दिस. Calcium, what is the charge on calcium chloride? What is the charge on calcium? 2 plus. कितने इलेक्ट्रॉन होना? 2 electrons. 2 electrons will give calcium. ओए 2 into 96,500 coulombs can liberate 40 grams. 40 grams. क्या दिया है ना? 5 एम्पियर करंट. ओके 60 ग्राम्स होना. 60 ग्राम्स को कहते हैं coulombs. क्यू इन है. So question mark. So x is equal to 2 into 96500 divided by 40 into 60. So 0 gets cancelled. 2 2s are 4, 2 3s are 6. होगा. So x is equal to 96500 into 3 coulombs. He want current. He wants in ampere. So Q is equal to I into T. Q कहती है 96500 into 3. एम्पियर कितने एम्पियर करंट? 5 एम्पियर करंट. टाइम क्वेश्चन. सो 96500 into 3 डिवाइडेड बाई 5. सो 5 के टेबल में 0.6. 0.6 का तो नहीं चलेगा, एक जीरो चलेगा. तो बचा कितना? 6. क्यू इज टी इज इक्वल टू 9650 into 6. But he wants in, ये आपको seconds में मिला. So he wants in hours. So divide by 60 into 60. 6 ones are 6, 6 tens are 60. 1 0 gets cancelled, 1 0 gets cancelled. So this is around what is it called as? This 9650. Okay, okay. 9. So 12 5s are 5 12s are 60. 5 1s are 5. कितने बचे अभी? 4. 5 9s are 45. 5 3s are 15. 12 4 3 के टेबल में 3 6 18 ना. ओके कितना? 60 16 आवर्स. ऑप्शन डी. अब आंसर नहीं आएगा ना, मार दो तो अब सही में. अब आंसर नहीं आएगा तो अब मारा खाती. आई वांट नो आंसर. Hey boys, you need to work it out now. Over.
Question number 52. Only coulombs the question 965 coulombs. Answer. What is the answer? This girl. Hey, Buffalo. Again, you're missing this thing is silver पर charge किया था? D. Yes. So this is silver. Ag plus 1 electron gives Ag. 96500 gives 108 grams. 965 coulombs. In a coulombs itna gives how much? 965 into 108 divided by 96500. Ones are hundreds are. 100 is nothing but 0 1.08 grams. Option D. ये करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम ये हो गए ये करेंगे ये कैसा करना सर ये अच्छा यस यस क्वेश्चन नंबर 48 रेड ऑन 48 मोलारिटी में याद आना कैसा करना कैन वी प्रोसीड चलो लेट्स स्टार्ट देखो क्या भी नहीं करना यू हैव टू स्टार्ट लाइक दिस ओके व्हाट इज द चार्ज ऑन सिल्वर Ag plus क्या भी करना नहीं 1 electron give rise to Ag correct 96500 gives कितना नहीं 1 mole बोल सकती है हाँ इन्हें कितना कभी भी याद रखो m1 v1 if you multiply 125 into 1 is called as 125
मिलीमोल्स. क्या M1V1 को मल्टीप्लाई करें तो इन वॉल्यूम कभी भी मिली मोल्स. मिली को क्या करना 125 इंटू 10⁻³ मोल्स. तो that is equal to 125 into 10⁻³ moles required how many coulombs. उसे क्या होना सो time या time होना so q is equal to q is equal to 96500 into 125 into 10⁻³ by 1 mole. तो 2 0 गए तो ये बच्चा 965 into 125 divided by 10. एक बच गया ना. 5 के टेबल्स में 2 times 5 2s are 10, 5 5s are 25, 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 8s are 16, 2 5s are 15, 2 7s are 14. नहीं कहता है और एक टाइम 2 1 2 4s are 8, 2 8s are 16, 2 2s are 4 into 25. यहाँ को Q. This is Q. What he wants Q? He wants time. So Q is equal to I into T. So Q is 482 into 25. Time current क्या था 241 242 is equal to time. तो वन सा कितना ये 2 times 2 into 50 50. मैं क्या करा दूसरे स्टूडेंट क्या करते हैं हाँ देखो मोलारिटी लिखते हैं W2/M2 लिखते हैं into 1000/V लिखते हैं. इससे मास निकालते हैं सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इट टेक्स टाइम. तो डायरेक्टली क्या करें यस और okay, I have some work. I'll just call you. Somebody has come. We'll stop here.